ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाऊढं, वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गदिं पत्वे वोचामि समयपाहुड नीडमो सुध केवली बणिदम। हमेशा कर्ता कर्म अधिकार में बहुत ही महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक प्रकरण ભૂતાવિષ્ટ और ધ્યાનાવિષ્ટ એના ઉપર આપણી ચર્ચા થઈ, બરાબર ને? અને મુદ્દાની વાત આટલી આવી કે જે પોતાને એક જ્ઞાયક ભાવરૂપ સ્વીકારતો નથી એ ભૂતાવિષ્ટ પુરુષની જેમ રાગાદી ભાવોનો કરતા પ્રતિભાસે છે, એમ ધ્યાનાવિષ્ટ પુરુષની જેમ જેમ કોઈ કહે ને કે ભાઈ હું આવો થઈ ગયો, આવો થઈ ગયો, આવું થઈ ગયું, પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય અને ધ્યાનાવિષ્ટની જેમ વાપરે। ખ્યાલમાં આવે છે? सम्मोहन क्या जो विज्ञान में बहुत ज़्यादा हुआ, मनोविज्ञान में जिस पर बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए, हिप्नोटाइज, वो क्या है? ध्यानाविष्ट का एग्जाम्पल है। खरेखर ऐसे प्रयोग ऑन रिकॉर्डेड हुए हैं कि किसी पुरुष को बोला और गहन उसके अंदर में ये बात बैठा दी कि तुम महिला हो, मतलब लिटरली हिप्नोटाइज जिसने किया उस व्यक्ति ने उसे डीप चैम्बर में लेके गया और उसने उसको सम्मोहित किया, था पुरुष, सिखाया ऐसे कि तुम महिला हो, इतना उसके अंदर में डाला और जैसे ही बाहर आया उसकी भाषा बदल गई, उसके हाव भाव बदल गए, उसकी जो चाल बदल गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, सब बदल गया है। तो ये जो कुछ भी हमारा, इससे क्या सिद्ध होता है? एक बार तो ऐसा प्रयोग शायद मिशिगन यूनिवर्सिटी में था, कहाँ पढ़ता पता नहीं, कि एक सम्मोहन करने वाले ने, उसके बाद से फिर सम्मोहन पे बहुत बैन हो गया। हिप्नोटिज्म के ऊपर ज़्यादा होते नहीं है मनोविज्ञान में प्रयोग। मनोवैज्ञानिक लोग प्रयोग करते करते एक व्यक्ति को बोला कि तुम मर गए, और उसने अपने आप को मृत मान लिया और वो लिटरली उसकी धड़कन भी बंद हो गई और मर भी गया। तब से ये शायद ये प्रयोगों पे बहुत पाबंदियाँ आ गई, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत पर्पस वगैरह जानकर करते हैं, बराबर ख्याल में है। यानी समझने क्या है अपने को इन सब बातों से कि ये जो हमारा इस पर्याय का अहमपना है ये एक धारणा से अधिक नहीं है। क्या बोला? एक धारणा मन में आ गई कि मैं पुरुष हूँ, पूरी जिंदगी पुरुषोचित व्यवहार करते करते निकल जाता। दूसरी धारणा मन में बैठ गई कि मैं महिला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उस धारणा के हिसाब से पूरा जीवन बैठ गया, निकल गया। और बस एक मान्यता, उसको ये नहीं सिखाया कि लड़कियों को कैसे चलना चाहिए, उसे ये नहीं सिखाया कि लड़कियों को कैसे बोलना चाहिए, उसे ये नहीं सिखाया लड़की को, उस पुरुष को कि महिलाएं कैसे हाव भाव करती। उसके अंदर में मात्र एक धारणा बिठाई कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम स्त्री हो। और जैसे ये धारणा बैठी उसकी भाषा बदल गई, उसके हाव भाव बदल गए, उसका बोलचाल बदल गया, हर चीज बदल गई।
आप समझ रहे हो, कुनकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव ये ध्यानाविष्ट कहकर ये सारी बातें आपको बताना चाहते हैं कि हे जीव, तू जिन जिन को भी अपना कहता है वो एक्चुअल में तू नहीं है, तू तो एक ज्ञायक भाव मात्र है, बाकी सबको तू धारणा में अपना मान रहा है, धारण करके रखा ये है नहीं, ये क्या करके रखा है, धारण। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं पैसे वाला, मैं प्रॉपर्टी वाला, मर जाएगा प्रॉपर्टी यहीं पड़ी रह जाएगी, पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो, विचार करके देखो, शरीर सुंदर जल जाएगा, राख हो जाएगा, कहाँ कौन साथ में आएगा है? तो हमारे जो संसार का व्याप है वो दो चीज़ों पर टिका है। एक, हालांकि वो एक ही चीज़ है लेकिन कथन में दो आती हैं। कौन सी? कि एक जो मैं हूँ उसे मैं मानता नहीं हूँ, और दूसरी वह कि जो मैं नहीं हूँ वो मैं मान लेता। क्या बोला? सरल सी बात है ना भैया, कठिन नहीं है ना। क्या बोला? जे हूँ छू ए स्वीकार तो નથી અને જે હું સ્વીકારું છું એ હું છું નહીં। હું કેવો છું એવો પ્રશ્ન આવે તો વારંવાર કીધું, સર્વજ્ઞે જેવો જાણ્યો, જ્ઞાનીઓના અનુભવમાં જેવો આવ્યો, अथवा परंपरा ज्ञानियों ने जेवो प्ररूपित कर्यो एवो हूँ छू। क्योंकि हूँ જ્યારે मारा रूपे जोवा जाऊँ तो हजी तो मारी अवस्था एवी छे ने कि राग रूप मानी लऊँ, द्वेष रूप मानी लऊँ, क्रोध रूप मानी लऊँ, देह रूप मानी लऊँ, जे जे छे बधाने मान। सब मान्यता ही तो और क्या है, विचार करके देखो है? हमारे सोसाइटी में एक नीचे बालक रहता है, 4-5 साल का है, उसको कोई घर में बुलाता ही नहीं है। क्यों नहीं बुलाता? उसकी क्या मान्यता है, जहाँ पे भी जाए जैसे ये मेरे, ये टूटू के, और लेके चलता बनता। अब उसकी मम्मी परेशान है, लेकिन उसकी मान्यता में है कि जो मेरे ज्ञान का विषय वो मेरा, धारणा। अब उसे आप आप आपकी भाषा में आप उसे समझदार नहीं कह सकते, बराबर, लेकिन वो भूल तो वही कर रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ। सुनती भाई, ख्याल में आप उसे नहीं कहोगे, क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एक के रमकड़े एक के होते हैं, दूसरे के दूसरे होते हैं, फलाना, ये सब अपने अपने हिसाब से अपन ने उसका सेट किया है, क्योंकि हमने उसके लिए धन दिया है या वॉटेवर जो कुछ भी हमने किया है। उसकी इतनी समझ विकसित नहीं हुई है। वो तो जहाँ पे भी जाएगा उसे जो चीज़, ये रिमोट देखा, ये रिमोट टूटू का है, बस लेके चलता बनेगा, ये कार टूटू की है, लेके चलता बनेगा। अब कितना भी तुम बोलो नहीं मेरी है, अब तुम उसे कैसे सिखाओगे कि भाई तेरी कैसे हो गई? आचार्य भी यही कह रहे हैं, तुम कहते हो मेरा घर मेरा है, परिवार मेरा है, अरे तुम टूटो। क्या हो, कैसे हो गई बताओ तो? तुम नहीं थे तब भी जमीन थी, तुम नहीं रहोगे तब भी जमीन रहेगी। शरीर के पुद्गल परमाणु ये इस लोक से ही ग्रहण किए हैं, इससे शरीर बन गया, मर जाओगे फिर से चले जाएंगे। तुम्हारे थे कहाँ? जन्म से पहले तुम्हारे पास पदवी नहीं थी, मरण के बाद तुम्हारे पास पदवी नहीं रहेगी, अथवा रहेगी तो तुम्हारी पर्याय की रहेगी, तुम तो कहाँ कहाँ घूमते रहोगे। तो ये सब वही बचकानी मान्यता है। जैसे उस बालक की अपन कहे समझ कमजोर है, इसके लिए कोई आधार नहीं है उस बात को मानने का, ऐसी हमारी समझ कमजोर है कि हमारे पास कोई आधार नहीं है उस बात को मानने का। बता, विचार करके देखो, एक कागज पे साइन करके एक जमीन का टुकड़ा तुम्हारा हो गया, कैसे ये हो सकता है? परमाणु मात्र को आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता साहब। और तुमने एक कागज के टुकड़े पे साइन किया, वही जमीन मेरी, और फिर फूले फूले घूम रहेगी। एवो नहीं हमारी आटली बधी प्रॉपर्टी है, गामडामां छे, अहींया छे, त्यां छे, बधुं त्यांनो त्यां छे ने तू त्यांनो त्यां छे। हाँ हाँ हाँ।
यानी मूल बात यही निकलकर सामने आती है कि सारा संसार एक मिथ्या धारणा से जुड़ा हुआ है और वो मिथ्या धारणा द्विमुखी है। कौन सी? जेवो हूँ छूं एवो નથી માનવાનું અને જેવો હું થઈ શકતો નથી એવો। આટલું મૂળભૂત સંશોધન આપણા અંદરમાં થાય તો બધું સંસાર પર કંઈ છે જ નહીં। શ્રીમદ એટલા માટે તો ફરમાવે છે, ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ। એ મોહ વિકલ્પ એટલે શું છે? એ જ કે હું તો જ્ઞાયક ભાવ રૂપ છું એવો માન્યા વગર, એટલો એવો નકારીને બીજું કંઈ પણ માને આ સંસાર છે। પછી શું કે છેલ્લે? જ્ઞાન કલા प्रकाश ते विलय थता। ज्ञान में निर्णय हो गया, उसको फिर से सम्मोहन में लेके गए उस पुरुष को, बराबर, और फिर से जाके हिप्नोटाइज किया और उसको बोला कि भाई तू पुरुष है। अच्छा पुरुष है, अब ऐसे मत बोल। अरे बोलेगा ही नहीं, समझ में आया? वो अब बोलेगा ही नहीं, उसकी चाल बदल जाएगी। हाँ वो सब धारणा से था। लेकिन एक बात है, सम्मोहन में भी सब में एक ही बात आती है कि जब तक आप मोहित होना नहीं चाहो तब तक कोई आपको मोहित नहीं कर सकता। हिप्नोटिज्म का भी फंडामेंटल सिद्धांत है। डॉक्टर्स के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए, बराबर, और आप उसके साथ कोऑपरेट करोगे। कोऑपरेट करोगे मतलब आप उसकी बातों को वैसा स्वीकारोगे, तब जाके वो असर करता है। अगर आप वैसा स्वीकारना नहीं चाहो तो कितना बड़े से बड़ा सम्मोहन वाला हो वो आपको मोहित नहीं कर सकता, बराबर। तो हमारा फेथ तो है, लेकिन संसार के डॉक्टर में है, मोक्ष के डॉक्टर में नहीं। संसार के डॉक्टर कर्म आके जो हमें बता के चले जाते हैं, हम उनको पूरे विश्वास के साथ में मान लेते हैं। कर्म ने पुरुष बना दिया, कर्म ने पैसा वाला बना दिया, कर्म ने पदवी वाला बना दिया और हमने मान लिया। और बना क्या दिया? कर्म ने कहा और संयोगों के रूप में एक एक्सटर्नल कारण दे दिया जिससे आप ऐसा मान लो, बराबर। और वहीं पे मोक्ष के डॉक्टर सर्वज्ञ भगवान हमें ऐसा कह रहे कि अरे भाई तू ऐसा नहीं है क्यों मानता है, ऐसा नहीं है क्यों मानता है, ऐसा नहीं है क्यों मानता है। लेकिन जो कर्म कह रहे हैं वो सत्य प्रतिभासित होता, और जो सर्वज्ञ कह रहे हैं वो ठीक है, कहवा तू सत्य प्रतिभास है। समझे? एक तो साचो लागे અને કહેવાતો પૂરતો સાચો લાગે, આટલો ફેર પડે છે। એટલા માટે ગંભીરતા સાથે વિચારો ભાઈ, આ બહુ જ માર્મિક વાત છે। આ ભૂતાવિષ્ટ અને ધ્યાનાવિષ્ટની ચર્ચા આવી ને એનાથી તમને બે વસ્તુ ખબર પડી જશે કે બંધાવ્યા કેવી રીતે છો તમે અને છૂટશો કેવી રીતે। ખોટું માનીને બંધાવ્યા છો ને સાચું માનીને છૂટી જશો। એ જો એટલા માટે હવે આ ગાથાની આગળની ગાથાની વાત કરે છે, કેવી રીતે 97ની ગાથા જો। તેથી એટલે પહેલાંની બધી વાત આપણે ક્લિયર થઈ ગઈ ને 174। તેથી એ સિદ્ધ થયો સતમ એતદ, આચાર્ય પોતાની રીતે સિદ્ધ કરી દીધું છે, આપણે સિદ્ધિ કરવાની બાકી છે। આચાર્ય તો બધું તર્કથી યુક્તિથી બધું શીખવાડી દીધું કે ભાઈ ધ્યાનાવિષ્ટની ભૂલ શું, ભૂતાવિષ્ટની ભૂલ શું અને આખી સંસારની મૂળ ભૂલ શું, બધું શીખવાડી દીધું। હવે તેથી એ સિદ્ધ થયો કે જ્ઞાનથી કરતાપણાનો નાશ થાય છે। જો એટલે મુક્તિની ચાવી ક્યાં આવી? જ્ઞાનમાં। કર્મ બંધનના અભાવની ચાવી ક્યાં આવી? જ્ઞાનમાં। कि प्रभु तने मुक्त थवू होय बहार में कहीं करवू नहीं, जेवो छे एवो नो एवो
લાગ લપેટ કર્યા વગર સ્વીકારવું છે. કંઈ પણ જાતનો તમે તમારા ઇમેજિનેશન કરો કે ના ના હું આત્મા તો છું ને, પણ પંડિત પણ છું ને, તો મને તો આટલું કરવું જ પડે. બધા હવે તું ભરાઈ ગઈ. હું આત્મા તો છું ને, પણ આમ સમાજનો પ્રમુખ છું ને, હવે આટલું તો કરવું જ પડે. ભરાઈ જશે. હા, આઝાદીનો ઝંડો ફરકાવવું પડે ને. હા પ્રભુ, આઝાદ થવું છે તો આ ફરકવા. ઓ પ્રભુ, કે હું જ્ઞાન માત્ર છું અને એ જ્ઞાન માત્ર પોતાને માનવાથી રત્નત્રયનો તિરંગો ફરકી જાય. સમજ્યા? હા. શું કયો કયો તિરંગો? રત્નત્રયનો તિરંગો. અત્યાર સુધી એમાં એ બંધાયેલો છે ભાઈ, આત્મા બંધાયેલો છે. શેને લીધે? પોતાનો સ્વરૂપ જેવો છે એવો માનતો નથી. અને આઝાદી મનાવવાની. અરે પ્રભુ, ઠીક છે, લૌકિકમાં જે ચાલે એ બરાબર છે, ઘર ઘર તિરંગા, ઘર ઘર તિરંગા, પણ આપણે તો અંતરમાં તિરંગા જોઈએ, ઘર ઘર તિરંગા નહીં જોઈએ. ઠીક છે, જોઈએ રાખો, એનો કોઈ નિષેધ પણ નથી. મારા ઘરે ફરકે છે, એમાં કંઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. પણ ઘર ઘર તિરંગા એ બીજી વસ્તુ છે અને અંતરમાં તિરંગા એ બીજી વસ્તુ છે. રત્નત્રયના રંગનો ઝંડો અંદરમાં ફરકે એ સમયસારનો તિરંગો છે. ઘર ઘરમાં નહીં, અંતરમાં તિરંગો ફરકે. બરાબર. અને એને વચ્ચે અશોક ચક્ર પણ છે. ચક્ર છે એટલે કન્ટિન્યુઅસ રહેશે. કયો ભાવ? અશોકનો. એટલે જેના અંદરમાં તિરંગો ફરક્યો હોય એને સંસારનો શોક 24 કલાક નહીં, કન્ટિન્યુઅસ. ચક્રનો મતલબ એ જ હોય જેનો આદિ નથી, અંત નથી, જે ચાલ્યા જ કરે. તો જેને અંદરમાં રત્નત્રયનો તિરંગો ફરક્યો હોય એને કન્ટિન્યુઅસ સાદી અનંત કાલ સુધી કેવો રહે? અશોક ભાવ. એટલે શોક ના રહે, સુખ રહે, આનંદ રહે. હા, ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હે? હા. તો ઘર ઘર તિરંગા એ 12 વાલા શીખવાડે ને અંતરમાં તિરંગા રત્નત્રયનો રંગ લાગે તો વાત છે ભાઈ. એ રત્નત્રયનો રંગ, જેમ કે પહેલો તિરંગો તો 100-200 વર્ષની ગુલામીની આઝાદીનો પ્રતીક છે, અને રત્નત્રયનો તિરંગો કેટલી ગુલામીનો આઝાદીથી પ્રતીક છે? બોલો. અનાદિની ગુલામીની આઝાદી તો પ્રતીક છે. ખબર પડે છે? પહેલા ફરકાવવા માટે તો લોકો શહીદ થયા, અને આ માટે તો હું કેટલી વાર શહીદ થયો છું. બોલો. હે? વિચારો. ઇતિહાસમાં ભણીએ ને, सर हिमालय कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया. હા, એ પહેલા ઝંડાને ફરકાવવા માટે તો 12માં લોકો શહીદ થયા, લેકિન આ અંદરની આઝાદી માટે તો હું જ કેટલી વાર શહીદ થયો છું ભાઈ. વિચાર છે તમને? કદાચ એ વસ્તુનો અંદાજો હોય કે ના હોય, કેટલી વાર આપણે સમ્યક્તની હદ સુધી પહોંચ્યા છીએ. એવો નથી કે નથી પહોંચ્યા. બાર સર્વક ભગવંતોનો શું કહેવાય ઉપદેશ મળ્યો, જ્ઞાનીઓનો, મુનિ ભગવંતોનો આટલા ભાગા આપણે નથી કે ક્યારે સર્વજ્ઞ જ ના મળ્યા હોય, ક્યારે મુનિ ભગવંત જ ના મળ્યા હોય, ક્યારે જ્ઞાની જ ના મળ્યા હોય. એટલા ભાગા તો આપણે છીએ જ નહીં. અને ક્યારે તત્વ વિચાર પણ ના કર્યો હોય, આવું પણ નથી. કેમ કે જો પહેલાં તત્વ વિચાર ના કર્યો હોત તો આજે અહીંયા હોત જ નહીં. આ જે સાંભળવાનો અવસર મળે છે એ કોઈ આમ હવામાં ઉડતો લકીડવામાં આવી ગયો હોય, કોણ બનેગા કરોડપતિની જેમ, એવો નથી ભાઈ. જૈન ધર્મમાં કોઈ આવી વાત આવતી જ નથી. બગાસા ખાતા પતાસા ખાતા શું કહેવાય, બગાસા ખાતા પતાસા મળી જાય, આ જૈન ધર્મનો સિદ્ધાંત જ નથી. અહીંયા તો પતાસા માટે પતાસા જેવી મહેનત કરવી પડે, બરાબર, અને એને પેટભર ખાવા માટે પેટભર મહેનત કરવી પડે, અને આગળ અનંતકાલ સુધી ખાવા મળે એના માટે એવી મહેનત કરવી પડે.
જેવી મહેનત કરશો એવું મળશે. આ કોઈ બગાસા ખાતા ખાતા એટલે પ્રમાદમાં બેસેલા માણસોને આ વાત મળી જાય. आज भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि हमने मिल गया, आसानी से नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला. वो आसानी से जैसा लगता है मगर आसानी से बहुत मुश्किल है भाई. हाँ, ये है. कई बार तो इसकी सुलभता ही इसकी सबसे बड़ी वो लगती है कि इतना सुलभ हो गया हमारे लिए. टीवी खोलो तो प्रवचन मिल जाते हैं, मंदिर में आओ तो प्रवचन मिल जाते हैं, रात को सपना में देखो तो यूट्यूब पे प्रवचन मिल जाए. इतने मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं कि सब्जी भाजी से सस्ते हो गए हैं. इसीलिए लोगों को सब्जी भाजी की कीमत तो रही मगर ये सत्य वचनों की कीमत नहीं रही. सुलभता, सुलभता साधना के लिए कोई जीव साधनों के कारण इस स्वभाव से वंचित ना रह जाए, इसके लिए सुलभ किया. बराबर. लेकिन ये इतना सुलभ है नहीं भाई साहब. हाँ, पर्याय बदलेगी ना तब आपको इसकी दुर्लभता ख्याल में आएगी. मैं कई बार आपका विचार करके देखो, कोई भव्य जीव हो, पुरुषार्थ में थोड़ा चूक गया हो और मरकर त्रियंच में जाए. अब वो त्रियंच में बनकर कुत्ता बने, बंदर बने और उसकी इच्छा होगी मैं सुन लूँ साहब. क्या करोगे सुनती भाई, एक बेवट करने वाले के नाते? હું જ કઈ સંયમ પહેલાને કાઢો, પહેલાને કાઢો. जो मनुष्य पर्याय में बुलाऊं છું કે आओ સાંભળવા, आओ સાંભળવા, એ જીવ ફરીને ત્રિયંચની પર્યાયમાં જાય અને સાંભળવાની ઈચ્છા હોય અને આવે તો કે વિપુલભાઈ જ્યારે પહેલાને કાઢો ને, બધા બીવે છે. બોલ. એક એક શબ્દ સાંભળવા માટે જીવ તડપશે. આવું થાય. હા તો એવી છે. અને જગતમાં હજી બહુસંખ્યક રાશિ એવી જ છે, એવી જ છે જેને ખરેખર ધર્મ કરવું છે પણ કંઈ ખબર જ નથી પડતી શું કરવું છે, શું કરવું. હા હા, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલા માટે તમે એ નિર્ણય કરો, સમયસારનું અમૃત તમને મળ્યો છે ભાઈ, એ એમને એમ નથી મળ્યો. ભવોના પુણ્યથી ભેગો થયેલો જે લાભ છે જે તમને મળે છે. એમ કહેવાય ને, બાપા પોતાની સંપત્તિ છોડીને જાય તો બાપાને તો સંપત્તિ ભેગા કરવા માટે પોતાની જિંદગી કાઢી નાખી, બરાબર. અને છોકરાને કેવી રીતે મળી જાય? એમને એમ જ મળે ને. એ મકાન ભેગા કરવામાં બાપાના તો જિંદગી નીકળી ગઈ અને છોકરાને જન્મથી મળી જાય તો ઘણી વખત પિતાજી કહે છે કે તને કદર નથી, તને કદર નથી, તને કદર નથી. આ ધર્મમાં કેવો છે કે બાપોય હું છું ને દીકરોય હું છું. પૂર્વ પર્યાયના બાપે મહેનત કરી છે અને આ વર્તમાન પર્યાયમાં આ દીકરાએ મળ્યો છે. હવે એ જો પૂર્વ પર્યાયનો બાપ એટલે પૂર્વ પર્યાયનો જ્ઞાન તમને આવે તો ખબર પડે કે એમને તું એક વસ્તુ કેમ મિસ કરે છે ભલા માણસ, એના માટે કેટલો પુરુષાર્થ મેં કર્યો છે તને ખબર છે. અહીંયા તો બાપોએ પોતે અને દીકરા પણ પોતે જ છે પણ એ કદર નથી. એમ છે જન્મથી મળી ગયું ને એ વસ્તુ ખ્યાલમાં આવે. જો હવે મુદ્દાની વાત કરીએ તો જ્ઞાનથી શું થાય છે? કર્તાપણાનો નાશ થઈ જાય છે. આ સિદ્ધ થયો, બરાબર. હવે કહે છે જો એ દેણ દુસો કરતા નિશ્ચય વિદું આદા નિશ્ચય વિદું પરી કહી દો એવમ ખલુ જો જાણદી સો મુંચદી સવકાતિત્તમ. પढ़िए.
એદેણ એટલે આ પ્રમાણે. કયા પ્રમાણે? કે વ્યવહારથી જ્ઞાન સ્વભાવી પોતાને સ્વીકાર ના કરવાને લીધે, આ કારણથી. આમ કયો છે કે કરતા છે આત્મા રાગાદીનો, તો કેમ કયો? કેમ કે એની અનાદિની ભૂલ. ભૂલ એટલે ભાવે ભાવક ભાવમાં એકપણું કરે, જ્ઞેય જ્ઞાયક ભાવમાં એકપણું કરે, જે ભાવ થાય એને પોતાનો માની લે, જે જાણે એને પોતાનો માની લે. એ પ્રમાણે આત્મ સ્વભાવની અજ્ઞાનતાને લીધે ખ્યાલમાં આવે છે ને, એ દેણ આ વસ્તુ આવી ગઈ. ખબર પડી? આમ કરતા છે તો સારું છે એ નથી કીધું, આ ભૂલને લીધે કરતા છે. બરાબર? હા, ખ્યાલમાં આવે છે. એ એવું કહેવાય ને કે શું કહેવાય કે કોઈ શરાબ પાસે ડૉક્ટર પાસે જાય અને ડૉક્ટર પૂછે પીવો છો? આમ તો પીતો નથી પણ તમે કહો છો તો પી લઈશ. અરે ભલા માણા, તો પીવે છે માટે તારો લીવર હળ્યો છે. એટલે આ કોઈ વખાણ રૂપે નથી. ખબર પડી કે નહીં? સમજાય કે નહીં સમજાય? એ દેણ આ પ્રમાણે છે, તો પીવે છે તો તમે કહો છો તો પી લઈએ, આવું નથી કહેવા માંગતા આચાર્ય. આ તારી મોહની મદિરા છે અને મોહની મદિરાને લીધે તને એ રાગાદી ભાવોનો કર્તૃત્વ ભાસે છે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? બે વસ્તુ થઈ ગઈ ને. આમ કોઈને પૂછે કે ભાઈ તમે લો છો, તો કાં તો એની દુર્ગતિ બતાવવા માટે પૂછે કે તમે લો છો માટે આ તમારી શરીરની હાલત આવી થઈ, કાં બીજો પિયક્કડ હોય તો બીજાને ઓફર કરવા માટે પૂછે કે તમે લો છો તો આપ. અહીંયા કઈ રીતે લેવાનું છે આચાર્ય? આચાર્યની તો મોહરૂપી મદિરા ઉતરી ગઈ છે, આપણે ઉપર મોહની મદિરા ચડેલી છે. તો હવે આચાર્ય કહે અચ્છા તો તું બંધાય છે કેમ બંધાય છે? એ દેણ એ પ્રમાણે બંધાય. કેવી રીતે બંધાય? એ પ્રમાણેથી શું લીધું? એ જે પહેલા બધું ગાથાઓમાં આવ્યું, જ્ઞેય ગાયક શંકર ભાવ, ભાવિ ભાવક શંકર ભાવ, ભૂતાવેશ પુરુષ, ધ્યાનાવેશ પુરુષ, 72મી ગાથા, 38મી ગાથા, 73મી ગાથા, જેટલું બધું કીધું છે પહેલા એ બધું આવી ગયું. એ પ્રમાણે પ્રભુ તું પોતાને આત્મ સ્વરૂપ સ્વીકારતો નથી, અને આત્મ સ્વરૂપ સ્વીકારતો નથી માટે તેને એનો કરતા કીધું છે. તો કરતા કીધું ને, કરતા કીધું પણ ભાઈ સમજ, કરતા કહીને તને કોઈ સર્ટિફિકેટ નથી આપનારા. એ કરતા એટલે સંસારનો બંધન કરનારો મૂર્ખ માણસ, અને જ્ઞાતા એટલે સંસારના બંધનનો અભાવ કરનારો પુરુષાર્થી માણસ. તું લે છે તો સારો નથી, તારી કિડની એટલા માટે સડી છે, તારા ધન એટલા માટે ગયો છે, તારો યશ તારી કીર્તિ એટલા માટે મટી ગઈ છે કેમ કે તું શરાબ પીવે છે, એમ કહેવા માંગે આચાર્ય. इसीलिए ऐसे आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे हो भाई એટલા માટે કરતા કીધું. હવે કરતા કીધું છે ને, હવે કરવું તો પડે ને. આપણે મનમાં એવો ભાવ આવે, હવે તમને જ કરતા બનાવ્યું છે તો અમે કરીએ. અરે કરીએ નહીં, તું કરતા બનીને સંસાર બઢાવી રહ્યો છે એમ કહું છું. બીજું જેમ કહેવાય ને કે તમને જ મોનિટર બનાવ્યો છે ક્લાસમાં, હવે હું ડિસિપ્લિન કેમ નહીં રાખું? તમને જ મને પોલીસવાળો બનાવ્યું છે તો હું આવું કેમ નહીં કરું? આવું લોકો કહે કે તમને જ કરતા કીધું છે તો હું કર્મ કેમ નહીં કરું? અરે ભલા માણસ, તું મેં કોઈ બનાવ્યો નથી, અજ્ઞાનતાને લઈને તું બન્યો છે. કોઈ પિતા પોતાની સંતતિને પોતે પણ પીતો હોય ને તો આવું તો વિચાર ના કરે ને કે મારી સંતતિ પણ પીવે. એમ જ વિચાર કરે ને કે ભાઈ હું તો ભરાઈ ગયો, એ ના ભરાય, હું નમળો પાક્યો, કેમ કે નુકસાન તો એને ખબર હોય ને.
ગજબ છે ને. મદિરા પાનના નુકસાન મદિરા પીનારાને વધારે ખબર હોય, હે, પણ મોયના પાનના નુકસાનો જે મોયને અડ્યા નથી એમને ખબર છે. મોય રૂપીમાં આ મોય મદરાની ખાસિયત, આ મોય મદરાની ખાસિયત. પહેલી મદરા પીવાથી શું શું થાય છે? ધન જાય, યશ જાય, કીર્તિ જાય, હે, ખ્યાલમાં શરીરનું સ્વાસ્થ્ય જાય, હે, બધું જાય. એ પહેલાંને ખબર હોય, પણ એટલો નમળો હોય ને, कमजोर एकदम कि छोड़ नहीं पाता, उसे ज़्यादा अच्छे से पता रहता है. बराबर ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन मोय की मदिरा को पीने के क्या नुकसान होते हैं ये किनको पता? जिनको मोय छूता तक नहीं, उनको पता है कि देख भाई अब यही समस्या है कि जिनको मोय अड़ता तक नहीं है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने जिनवाणी में मोह के अभाव के परम सूत्र दिए. और हम जो फेमिलियर हैं मोह मदिरा से, मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरे मत वादी. ओ अनादि से मोह मदिरा पीने के कारण अपने आप को भूला અને વાદી ભટકતા રહા. ઓહો, અહીંયા કે સર્વજ્ઞ ભગવાન સમજાવે છે, પ્રભુ તું કરતા બન્યો છે, તેને કોઈ કિસીને તુજે કરતા બનાયા નહીં. એ દેણ આ કારણથી તું કરતા બન્યો છે. અને આ વાત પણ કોને કીધી? નિશ્ચય વિદુહીન, વ્યવહારના જાણ લખ્યું છે, જો વાંચો અહીંયા. આ કારણથી નિશ્ચયના જાણનારા. ઓહો, मैं कीधु ना, मोह के क्या नुकसान है ये कौन बता रहा? जो मोह में वो नहीं बता पा रहा, जो मोह से रहित है वो निश्चय को जानना रे. आ देखो, आ कारण थी निश्चयना जाणनारा ज्ञानीओए ते आत्माने करता कयो छे. कयो छे એટલે करता तो दिखे, क्योंकि जो बंध रहा है वो करता है, करे बिना बंधे तो अज्ञान हो जाए, अन्याय हो जाए. समझो जरा बात को. क्या बोला? कुदरत में न्याय की अन्याय? देखो, जब आप गलती करते हो ना, गलती, आप हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हो, आपके पास में पीयूसी नहीं हो, बराबर, और पुलिस वाला पकड़े तो आप उस पर ऑफेंसिव नहीं होते. સાહેબ સમજો ને, ઉતાવળ હતી ને, રહી ગયો તો છોકરાને મૂકા આટલો. અને એ તમે સમજો, એ તમારા ઉપર હેલ્મેટ હોય અને પુલિસવાળો તમને પાવતી ફાડવાનો કે ચાલ 50 રૂપિયા હાલ, અડી જશો. કેમ આપો? बोलो. जब हम अपनी भूल में होते हैं और ज़्यादा होगा तो वीडियो बना के हमारा तुम चालू करो, हूँ फेसबुक ऊपर नाखो तो पहला बी जाए. देखो मैंने हेलमेट लगाया है और ये भी किया है तो भी मुझसे ये कर रहे हैं फलाना. जब अपनी भूल होती है ना तो दंड हम स्वीकारते हैं, लेकिन अगर दंड तो शॉर्टकट निकालते. साहब समझो ना, थोड़ू घणું આમ છે તેમ છે, डिफेंसिव हो जाते हैं. और अपनी भूल नहीं होती तो आक्रामक हो जाते हैं. हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ यही कह रहे प्रभु कि ये अपनी भूल के कारण हम कर्ता बने, और अगर बिना भूल के फल मिले तो अन्याय हो जाए. और अन्याय को हम कैसे स्वीकार करें? यानी समझना, प्रति समय अगर कर्म सिद्धांत कहता है कि 7 कर्म निरंतर बंद रहे, बताएं आपको भैया, कर्म सिद्धांत कह रहा है कि हर समय यहाँ बैठे हो ना, तो यहाँ बैठे हो तो भी 7 कर्मों का बंधन चल रहा है. तो भूल के कारण चल रहा है कि भूल के बिना? ऐसे ही पावती आ रही है कि हेलमेट पहना हुआ है तो भी पावती आ रही है. अगर हम अपने में होते जैसे सिद्ध हैं और अंत हैं तो असंख्यात कर्माण वर्गणा में से एक कर्म परमाणु भी आपके पास नहीं आ पाता.
सिद्धों के चारों तरफ भी असंख्यात कर्मण वर्गणा है, कभी नहीं बनते, वो कभी नहीं बनते, अनंत काल से उन कर्मण वर्गणाओं के बीच में हैं। उनके शरीर के अंदर रहने वाले असंख्यात निगोदिया निरंतर कर्म से बंध रहे हैं, लेकिन उनको मजाल की कोई कर्म छू जाए, क्यों? स्वभाव में घन हो गए, विज्ञान घन बन गए। और अगर बंध रहे हैं अभी भी, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर में घनता नहीं है, इसलिए काट लग रहा है कर्मों का। घन वस्तु को काट नहीं लगता, लेकिन खोखली हो तो तुरंत काट लग जाता है। समझ में आया? यही कहे छे बराबर विचार जो जरा कि निश्चय को जानने वाले, या तो क्या, कर्ता तुझे किसी ने बनाया नहीं, तू अज्ञानता से पर को अपना मान रहा है। श्रद्धान में, अंतरंग के अभिप्राय में, चारित्र में कहीं ना कहीं से तो तेरा पर के साथ में अटैचमेंट है, और इसी के कारण तू बंध रहा है, तेरी भूल से ही बंध रहा है। कर्म बल जबरी से तुझे बांध नहीं रहा, बंधन चालू है तो भूल चालू है, क्योंकि कुदरत के न्याय में कभी अन्याय नहीं। अगर हम बंध रहे हैं तो बंधन का कारण भी हमारे अंदर में है, और कल को छूटेंगे तो छूटने का कारण भी हमारे अंदर, समझे नहीं? इसलिए कह रहे हैं, जो छूट गए वो बता रहे तुझे कि देख ऐसे छूटा जाता है, तू करता है क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर में भूल पड़ी। भूताविष्ट के जैसे जब क्रोध का भाव आता है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ओहो देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी दूर हो जाओ, मतलब अब तुम बंध रहे हो, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं देख लूंगा तुम्हें, मतलब अभी तुम क्या कर रहे हो? बंध रहे हो। जो भी अगर काम करोगे, अगर उसमें ये बात आई तो तुम बंध रहे हो तो बंद हो गए। उसी के कारण तुम्हें कर्ता कहा है। और कौन ने कहा? निश्चय को जानने वाले ने। देखो अपूर्वोक्त कारण थी निश्चय न जाननारा ज्ञानियों, जो निश्चय को जानते। निश्चय को जानने का एक दूसरा अर्थ क्या लें? जिसने मुक्त स्वरूपी आत्मा का अनुभव किया है। क्या बोला? जिसने मुक्त स्वरूपी, वो बंधन को पता कर पाएगा। जिसने निर्मल जल पिया हो वो अंतर कर पाएगा कि बाढ़ का पूर का मैला पानी पीने लायक नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? जो जन्म से ही समुद्र में रहा हो, खारा पानी जिस जलीय जीव ने पिया हो, उसे करुणा करके मीठा पानी पिलाओ तो उसे पता कहाँ चलेगा? वो तो यही लगता है कि खारा पानी पीने लायक होता है। गजब है ना। अपना श्रद्धान कितना प्रबल, बीच पर जाएंगे, कितने टनों, कितना समुद्र के पानी का कितना व्याप होगा, लाखों करोड़ में बात ही नहीं होगी। समझ लो ना, असंख्यात पानी है, असंख्यातों लीटर पानी है, लेकिन पीना हो तो एक अपने पास जो 1 लीटर पानी। अब ये ज्ञानी के, अब ये श्रद्धान कहाँ से आया? वो भी पानी है, ये भी पानी है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो वो अनंत गुना है, और उसी पानी में आप घंटे 2 घंटे तक छपछपिया कर रहे थे। तो भी जब पीने की बात आती है, पहली बोतल काट जो ना, कहा तो त्या बीच ऊपर कोई भाई पानी आप जो ना, पहले के जा छे ना पी लेने, આવું દુકાનવાળો કે ને તું હાલ ને ભાઈ કેમ માથાકૂટ કરે છે, જ્ઞાન નહીં હાલ અત્યારે પાણી હાલ। એટલે ये श्रद्धान कितना प्रबल है। अब कोई कहे कि पानी देख के मन ललचा जाता है? होता है ऐसा? अगर ललचाए तो वो पानी पीने का भाव आए, लेकिन वो तो कभी अगर मुंह में चला भी जाए तो थू-थू करके निकाल देता है। रहता पानी में लेकिन छूता तक नहीं। वह ज्ञानी यही है भाई, ये ज्ञानी। एक तरफ अनंत संसार दिख रहा है, बराबर, सुख की इच्छा भी है उसके अंदर में,
सारा जगत सुख के नाम पर वो खारा पानी पी रहा है, लेकिन ज्ञानी कहता है अरे नहीं, वो कैसे मैं पी लूं जिसमें खारापन है। अब ठीक है वहीं पर, लेकिन जब प्यास की बात आएगी तो कहां पर आएगा? अपनी बोतल में जो 1 लीटर पानी है उसको पिएगा। अज्ञानी ऐसे ही बोलता है कि अब दिख रहा है तो पी लिया, दिख रहा है तो पी लिया, दिख रहा है तो पी लिया। नहीं हुआ, तेरे अंदर में निर्णय कम था, निर्णय में कमी थी कि ये पीने लायक नहीं है और ये पीने लायक है। ऐसा जो मूलभूत निर्णय है वो कच्चा था। अभी अपने ऊपर विचार करो। अब ऐसे तो पंडित जी बाहर खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन सब कहते तो खा लेते हैं, है? मतलब क्या हुआ? निर्णय कच्चा है। सारा जगत समुद्र का पानी पी ले, खारा पानी तो तुम पी लोगे क्या? नहीं, कैसे पिए? ऐसे तो पंडित जी ऐसा करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन सब करते हैं तो कर लेते हैं। अरे भाई, श्रद्धान की कमी है। ऐसे तो हमें पता है कि पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज में रहना है तो थोड़ा तो होना चाहिए, इसीलिए कमा लेते हैं। श्रद्धान की कमी। ऐसे तो पता है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, ना ये करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अरे भाई, तुम्हें पीने योग्य पानी कौन सा है, ये मूलभूत निर्णय का अभाव है। इसीलिए समुद्र के खारे पानी पर मोहित होते हो। जिस दिन आत्मानुभवन के बल से ये जान लोगे कि प्यासे मर जाएंगे, लेकिन समुद्र का पानी, और डॉक्टर भी यही कहते हैं, कभी तुम आप अगर फंस जाओ समुद्र में तो भूल के भी समुद्र का पानी मत पीना, वरना कल के मरते आज मर जाओगे। ऐसा कहते हैं। समुद्र में फंस जाओ तो पीना तो अपने कैन का पानी, क्योंकि तुम्हारा शरीर उसे ग्रहण कर ही नहीं सकता। तुमने अगर पिया तो कल के मरते हो तो आज मर जाओगे। है कि नहीं है? पानी में रहता लेकिन पानी को नहीं पीता। हाँ, ऐसे ही स्वरूप। ज्ञानी संसार में रहता लेकिन संसार को नहीं पीता, ऐसे ही स्वरूप है। अब उस चीज को तुमने कितना और यहां पे बार बार ऐसा करना तो नहीं था लेकिन हो गया, ऐसा नहीं था, ये सब क्या है? ये सिर्फ इतना बताता है कि अभी भी निश्चय का जो स्वरूप है वो वेदन में नहीं है। निश्चय का स्वरूप ज्ञानानंद स्वभावी में हूं, ऐसा वेदन में आएगा तो जगत के प्रलोभन अपने आप धुल जाएंगे। अब सारा जगत कहेगा कि ये कर लो, तो भी तुम्हें क्या करें, हम कैसे करें, बताओ तो। समझ में आया कि नहीं है? यहां निर्णय बता रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब छोटी छोटी चीज़ों से तत्वज्ञान प्रबल होता है। व्यक्ति हमेशा दूसरों पर दोष देता है, लेकिन ये विचार कर कि दूसरे कहाँ तुझे प्रभावित कर पा रहे हैं? सारा जगत पूर्व में बह रहा हो और तू घर में हो तो क्या कूद जाएगा पूर्व में? अब सब बह रहे थे तो हमें तड़ा ही गया। सब महामारी में मर रहे हो तो खुद बीमार हो जाएगा क्या? अब पता बीमार रहता પછી એકલો પડી જતો તો હું માંદો થઈ ગયો। है બધા क्वारंटाइन है। हाँ, बोलो करे એવું કોઈ? तो બધા આખો જગત મોહમાં છે, માટે હું મોહમાં જતા રહું, એવો નિર્ણય હોય ખરો? સ્વાસ્થ્યને સમજો ના હોય એવો જ માણસ આવું કામ કરે। બધા ભૂખ્યા હોય માટે હું ભૂખો રહી જાઉં, એ ભોજન ના મળતો હોય, જે ભોજનની પૌષ્ટિકતાને ના જાણે, એ જ આવું કામ કરે। हेम प्रभु, बधा रागना जहर पीता होय तो आपणे रागी थई जवुं, ए ज व्यक्ति वो काम करे जेने ज्ञानना अमृतनो पान ना कर्यो होय। जेना अंदरमां ज्ञानना धोध आवता होय, ये तो कहते भाई तमनारी इच्छा तमने नहीं मळ्यो, आमां उमे शुं करीए, पण तमने नहीं मळ्यो माटे अमे तमारी जेम दुखी थई जईए, आ अमने पोसातो नथी भाई। आ मनुष्य पर्याय छे,
આત્માનો અનુભવન કરવા માટે મળી છે. હવે એના માટે તમે કહો કે આ કરી લો, પહેલું કરી લો, બીજું કરી લો, ત્રીજું કરી લો, આમ કરતાં કરતાં અમે પૂરાઈ જઈશું. અમને પાછું નિગોદમાં જવું નથી. હા, આવે છે ને पंडित जी की, मैं लौट के निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया है गमाऊंगा नहीं. बोलो, मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया है गमाऊंगा नहीं. है मेहनत से मैंने आत्मज्ञान ले ही लिया है. हाँ, ये शांति विधान किसी जयमाला की पंक्ति है. हाँ, किसकी है? रत्नत्रय की विधान की है शायद. रत्नत्रय विधान की है. આ વિચારો, મહેનત છે ભાઈ, એ પુણ્ય પાક્યો, પુરુષાર્થ કર્યો, બધું એના લીધે આ સમજ પાકી છે. હવે એમને નથી પાકી. હા હા, સંસારની ઘાસ ફૂસ તો કારણ વગર થાય, તત્વ જ્ઞાનનો પાક તો પુરુષાર્થથી થાય. આ સમજી લેજો. ભાઈ ખ્યાલમાં આવે છે? બહુ ઝીણી વાત છે ભાઈ. ઘાસ ફૂસ વારેસ છે ને હમણાં, તમે જો જ્યાં જો ત્યાં ઘાસ 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 ઘાસ, હરી 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 હરી. હે બોલો, શું ફસલ પણ આવી રીતે થઈ જાય? હે વિચારો, આ ઘાસ ફૂસ તો સંસારની ઘાસ ફૂસ તો એમને એમ થાય, ऐसे ही हो जाती है. लेकिन सम्यक्त्व का पाक, रत्नत्रय का पाक, ये ऐसे नहीं होता भाई साहब, तत्व ज्ञान से होता है. ऐसे ही छोड़ दे तो फसल खप जाती है. अब तुम घास खा रहे हो, हमारे पास अन्न है, अन्न नहीं अमृत है. अब देखो हमारी तो घास अपने आप हो जाती, तुम्हें अमृत की बड़ी चिंता है. तुम्हें अमृत का पता नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं है. हम क्या करें? सिंपल सी बात. लोग ऐसे कहते हैं अपने आप का, अब शू प्रवचन सांभो छो, रोज रोज सांभो छो. ऐसे ऐसे मुझे भी कहते हैं, ऐसे कैसे प्रवचन करते? मेरे कई श्वेतांबर मित्र है, हमारे तो 8 दिन के 8 फिक्स होते हैं, तुम रोज रोज क्या प्रवचन करते हो? ऐसा कौन सा धर्म करते हो? सुनने वालों को कहते हैं ऐसा क्या सुनते हो रोज रोज? हमें पण धर्म करे, પછી અમે પણ ધર્મ કરી, અમે પણ ધર્મ કરી. ભાઈ તારા ધર્મ તેને શું, કોને ધર્મ કહે છે તને ખબર નથી. અહીંયા કોને ધર્મ કીધું છે અમને ખબર છે. समझा कि नहीं समझा? अब तो अमृत को समझ लेता तो उसको घास के जैसे छोड़ता नहीं. ये छोड़ रहा है मतलब तूने अमृत को, घास तो पशुओं का पेट भरती, और अमृत मनुष्यों को अनंत काल के लिए तृप्त कर देता है. ये अमृत है. क्या अमृत है? जो ग्रीन कलर की गाथाओं लखी थी ना, ग्रीन कलर की गाथाओं, ये बता गुरुदेव की अत्यंत प्रिय गाथाओं, जो शुरुआत में समयसार प्रकाशित हुआ था ना, जो आज ग्रीन कलर में है ना, तब स्वर्ण अक्षरों में लिखी थी. ये पता है आपको? सोनगढ़ में शुरुआत में समयसार प्रकाशित हुआ था, तो जो गाथा इसमें ग्रीन कलर में लिखी है ना, वो शुरुआत में कैसे लिखी थी? स्वर्ण अक्षरों में लिखी थी. स्वर्ण अक्षर स्वर्ण जितनी कीमती है इसलिए नहीं, स्वर्ण से ज्यादा कीमती हमारे पास कुछ है नहीं इसके लिए. खबर पड़ी है भैया? है मतलब ये गाथा स्वर्ण जितनी कीमती ऐसा नहीं बोल रहा, मगर हम क्या करें? हमारे साथ या तो हीरा है, हीरे से लिखा नहीं जाता, तो श्रेष्ठ धातु कौन सी? तो हमारे पास जो श्रेष्ठ है वो सर्वश्रेष्ठ के लिए लिख समर्पित कर रहा है. ऐसा भाव अमृत है. लोग कहते हैं અમે શું છે, હવે ગાથા છે તો કરીએ છીએ ને, આટલું છે ને, પેલું છે, અમે ધર્મ કરીએ, અમે નવકાર માળા ગણીએ, અમે જાત્રા કરીએ, અમે અપાસ કરીએ, અમે પર પ્રભુ તું ये निर्णय करता है क्या कि पर मेरे में नहीं ना मैं पर में नहीं? बोले नहीं नहीं, वो क्या होता है? बोले बस तो घास फूस का, घास फूस का अमृत है. देखो माँ નિશ્ચયને જાણકાર જ્ઞાનીઓ એ આત્માએ કરતા કહ્યો છે આવું નિશ્ચયથી. હવે જો આવું જાણે છે તે જ્ઞાની થયો થકો, એ જ્ઞાની થયો. અને જે જ્ઞાની થયો એ સર્વ પ્રકારના કર્તૃત્વથી
छोड़िए भाई, बंधने की दौड़ हो तो मैं सबसे लास्ट में ठीक, बंधने की दौड़ हो तो मैं सबसे लास्ट में ठीक हूं। कर्ता बनकर अगर अनंत संसार मिलता हो तो क्यों बनूं मैं कर्ता? है? विचार करके देखो, ज्ञाता बनकर मुक्ति पथ मिलता हो तो क्यों ना बनूं मैं ज्ञाता? आવું જાણીને દ્રઢતાપૂર્વક પ્રલોભિત થયા વગર, જેમ કે મેં કેટલા દાખલાઓ આપ્યા, જ્ઞાનનો નિર્ણય કેટલો પાકો હોય. તમે સમુદ્રનો પાણી પીતા નથી, પૂરમાં તણાતા લોકો જોઈને તમે એમાં કૂદતા નથી, ભૂખમાં મરતા લોકોને જોઈને તમે ભૂખ્યા મરતા નથી, રોગી જો લોકોને જોઈને તમે રોગને ધારણ કરતા નથી. એમ સંસારના રોગથી ભૂખ્યા તરસા સંસારમાં તણાયેલા લોકોને જોઈને જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાન રૂપી અમૃતને છોડતો નથી, એ સંસારના કારણભૂત કર્તૃત્વને છોડી દે છે. વિશેષ ચર્ચા.